Greetings everyone. Today we are going to start a new topic named is division of fractions. It means that how we can divide two given fractions. Before starting the concept of division of fractions, we will discuss about reciprocal or multiplicative inverse. Reciprocal or multiplicative inverse. Reciprocal and multiplicative inverse means, suppose you have a fraction that is 2/3. हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन गिवन है 2/3. Then what is the reciprocal or multiplicative inverse of 2/3? Inverse of numerator and denominator. Inverse of numerator and denominator is known as reciprocal or multiplicative inverse. In 2/3, numerator is 2 and denominator is 3. Reciprocal of 2/3, changing of numerator and denominator. Numerator will be equals to 3 and denominator is equals to 2. So new fraction is 3/2. हमें जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगी वो क्या है हमारी 3/2. सो रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन 2/3 विल बी इक्वल्स टू 3/2. नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक डिवीजन ऑफ fractions. Suppose we have two fractions 22/4 divided by 11/6. हमारे पास टू फ्रैक्शंस गिवन है 22/4 and 11/6. We have to divide these two fractions. हमें इन दो फ्रैक्शंस को क्या करना है, डिवाइड करना है. So according to the formula, division of two fractions is equals to first given fraction multiply reciprocal of second fraction. Division of two fractions is equals to first given fraction, जो भी हमें फर्स्ट फ्रैक्शन गिवन होगी, the first fraction is 22/4. Division is converted into multiplication. जो हमारी डिवीजन है वो किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में. आफ्टर दैट रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, और जो हमारी सेकेंड फ्रैक्शन होगी उसका हमें क्या लेना है,
reciprocal. It will be equals to 6 by 11. 22 is divisible by 11. 11 on the 11. 11 to the 22. 6 and 4 is divisible by 2. We can also cancel 2 2. So the required result will be equals to 3. So division of 22 by 4 and 11 by 6 is equals to 3. One more example is 16 by 7 divided by 4 by 28. Again हमारे पास two fractions given है and we have to divide these two fractions. और हमें दो फ्रैक्शन जो हमारे पास टू गिवन फ्रैक्शंस है उनको क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द डिवीजन ऑफ टू फ्रैक्शन, फर्स्ट गिवन फ्रैक्शन जो भी हमारे पास फर्स्ट गिवन फ्रैक्शन होगी मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू 28 by 4. We can also cancel it at the table of 4 and 7 4s are 28. So required result will be equals to required result will be equals to 16. 4 4s are 16. I hope students you have understood the concept of division of two fractions, and with the help of